Good afternoon, my future chartered accountants, my FCA, my friends. कैसे हैं सब लोग? होपफुली सबने रिवीजन कर लिया होगा आज के लिए. जब आप लोग क्लास स्टार्ट होती है ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था सुबह से. बड़ा एनर्जी सी आती है मुझे आप लोगों के साथ. तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन. अच्छा, टुडे वी विल रिवाइज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे, उसी का टेस्ट रखेंगे, और पार्ट 2 और जो थर्ड नेक्स्ट पार्ट है उसका हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज माइनर. तो सेक्शन 3 सेज इन of Indian Majority Act 1875, minor is the person who is under 18 position. Legal rules regarding the contract with minor. An agreement is void ab initio. Void ab initio मतलब void from very beginning. It cannot be confirmed on attaining majority. Cannot be asked to compensate or pay for any benefit under a void agreement. यानी कि अगर माइनर ने कोई बेनिफिट लिए हैं तो भी उसे कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है अगर वो उसके पास नहीं है उसको देने के लिए. माइनर कैन मिसरिप्रेजेंट हिज माइनॉरिटी. माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलाउज a minor to be enter into the partnership firm as a partner for benefits only if all other partners allow. Minor cannot be declared insolvent. Parents are not liable for the acts of minor. Minor can be agent but without incurring any personal liability. In case of joint contract by minor and the adult, only adult is liable, minor is not liable. Adult can be surety or guarantee for minor. A minor may acting though his lawful guardian and become a shareholder under the guardianship. Minor is personally liable for the torts. Torts means civil wrongs. Minor is personally liable for the necessaries like food, cloth, education, shelter, right? Persons of unsound mind. This is the second category, the person who are not capable to enter into contract. And person of unsound mind are classified in 3 categories: idiot, lunatic, and toxicant. Idiot are those persons who are completely unsound and the contact with these persons are void. Lunatic are those persons who are generally unsound but sometimes are sound. The contact can be done only when they are sound. Intoxicant person who are generally sound but sometimes they are unsound. The contact cannot be done when they are unsound. Burden of proof. In case of lunatic, the person who says the contract was entered at that time when the lunatic is the sound, he has to prove. जो lunatic केस में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि जो मैक्सिमम टाइम ये अनसाउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, आपको प्रूफ क्या करना है, इट इज वैलिड. इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट सिचुएशन इज रिवर्स. कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिज्यूम्ड एज valid. The person who says the contract is void, he has to prove that contract was entered by the person who was unsound mind at that time. Some persons are disqualified by law: alien enemy, foreign rulers, corporation, insolvent, and convicts. So this was the revision for part 1. So just prepare the self-assessment test sheet. Then we will have the test for 10 days. क्वेश्चन, चलिए अभी हम एक बच्चे की क्वेरी है सर, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए. क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ. क्वेश्चन फिजिकल टॉर्चर, किसी को थ्रेट देना, किसी को मारना, पीटना, इट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज जस्ट टू threat of any act which is prohibited by IPC, Indian Penal Code. Crime, threat of crime, which this is called coercion. Writing practice you have to done yourself. Writing practice आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर करिए, खुद कोशिश करिए, हो जाएगा बच्चे. So hopefully all of you have prepared this sheet. So let's start. Once again, before starting a test, all the best to all of you, and again good afternoon to all of you. ठीक है.
So first question, the requirement that the parties to an agreement must be competent to contract is laid in section 10, 11, 24 or 25. If a person is drunk, it is called the case of intoxicant. So the answer is very simple question, simple answer, section 11. Next question. Which of the following person do not fall in the category of person of unsound mind? इनमें से कौन है जो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं आता है? The answer is alien. Alien enemy is not covered in the category of unsound mind. As a general rule, an agreement with or by minor is void ab initio, voidable, valid, unlawful. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. माइनर भी बता सकता है इसका आंसर. The answer is void ab initio. Fourth question, in case where minor enters into an agreement for the purchase of necessaries, then minor is personally liable to pay, minor's estate means property, is liable to pay, minor's guardian are liable to pay, none of these, as minor's agreement is void. My future chartered accountants, I'm addressing you. Please listen my words. You need not to send your answers. This self assessment test. आप खुद चेक करिए बच्चे क्यों भेज रहे हैं answers. The answer is minor's estate यानी property is liable. अगर minor के पास property है तो ही liable होगा, otherwise liable नहीं होगा. Person of unsound mind are competent to contract, not competent to contract, discouraged by law not to enter into contract, required to enter into contract with the permission of the court. The answer is not competent to contract, right? Next. A lunatic can enter into a valid contract at any time, only with the permission of court, if the other party has no objection, only during lucid interval. Lucid interval मतलब जिस समय वो lunatic नहीं है. The answer is D, when he is not lunatic. A minor can be appointed as an agent, cannot be appointed as an agent, can appoint others as his agent, none of these. The answer is can be appointed as an agent. A convict who is sentenced for imprisonment, यानी इसको सजा हो गई है, सजा में है, जेल में है वो, cannot enter into contract throughout his life, cannot enter into contract during the period of imprisonment, can enter into valid contract even during the imprisonment,
can enter into only a contract of marriage? Which is the right option? Which is the best option? The answer is cannot enter into a contract during the period of imprisonment, right? A contract is space if it is beneficial to minor, valid, void ab initio, void ab initio. अगर minor के benefit के लिए है तो the answer is perfectly valid. Which of the following persons are disqualified by law from entering into a valid contract? Alien enemies, insolvents, convicts, all of these. Simple सा question. The answer is all of these. So, meaning of consent. Consent means confirmation, सहमति. Section 13 defines consent. Two persons should be agree into the same on the same thing in the same sense. That is called consensus ad idem. दो लोग जो बात कर रहे हो सहमति आ रही हो, कंफर्मेशन आ रहा हो, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, साक्षी जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज हमारा 5th लेक्चर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर. 9th लेक्चर में पूरा 1 घंटा है इस पर डिस्कस करने की, डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट एट प्रेजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर नॉट इंटेंशनली क्रिएटेड, एंटर्ड. They are the liability is created by law, and the contract, the liability is created on the basis of situation. ठीक है, चलिए और क्या है. Sir, I could not attend lecture number 2 and 3 because of illness. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग्स आर देयर, आप रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं बच्चे. मिस आशा सर, मेरी क्वेरीज आ रहे हैं या नहीं? बेटे आप मुझे क्वेरी, मुझे अभी दिखी नहीं अभी तक क्वेरी आपकी, सिर्फ यही क्वेश्चन दिखाई दिया है. सो होपफुली, अरे वाह, आज तो बहुत बच्चों के 10 on 10 है. ग्रेट. कन्विक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? कन्विक्ट्स का मीनिंग होता है अपराधी, जो जेल में चला जाता है, जिसने अपराध किया हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था. फ्रॉड. फ्री कंसेंट में वी हैव डिस्कस कोर्शन. कोर्शन मींस फिजिकल टॉर्चर. अंडर इन्फ्लुएंस, मोरल प्रेशर, राइट. मोरल प्रेशर. एंड थर्ड वन इज फ्रॉड, धोखा देना. हिंदी में लिख लो धोखा, फ्रॉड. इन लॉ for fraud 5 points are given. You can say there are 5 cases where fraud is considered. So let's start section 17. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or by his agent with the intention to deceive or to induce a person to enter into a contract. With intention to deceive, धोखा देने के उद्देश्य से, और to फुसलाना, पर्सन को फुसलाने के लिए. And act is committed by party himself or by his agent. If act is committed by agent,
then it is also fraud. So what are those acts? The suggestion that a fact is true when it is not true, and the person making the suggestion does not believe it to be true. He believes it is false. एक स्टेटमेंट जो पता है कि गलत है, झूठ है, फिर भी वो कह रहा है सच है, तो ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड। यानी कि बस इन सिंपल लैंग्वेज फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इफ वी सिंप्लीफाई द फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। The suggestion that a fact is true when it is not true and the person making the suggestion does not believe it to be true. यानी कि जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। Second, see the example. A sells his watch to B by saying that the watch is made in Japan, but actually the watch is Indian and the fact is known to A, hence A made a fraud. एक घड़ी बेच रहा है बी को कह के जापानी है, वो है इंडियन, तो वो झूठ बोल रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय ए पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आपने जानबूझ के कोई बात छिपाई जबकि आपको फैक्ट्स पता थे। X sells a horse to Y and horse is blind. X knows the fact. When Y asks, is horse blind? X clearly says no. Here X made a. Third one is promise made without any intention of performing it. Means you are making the promise, but you know you will not perform accordingly. आप प्रॉमिस तो कर रहे हैं पर आपको ही पता है कि वो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ये फ्रॉड माना जाए। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, फिटेड टू डिसीव मत, फॉर द पर्पस टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया काम क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। ए एग्रीज टू डबल बीज गोल्ड, ए एग्रीज टू डबल बीज गोल्ड बाय मैजिक एंड रन्स अवे विद हिज गोल्ड, this is again a fraud. Fifth point, any such act or omission as the law specifically declares to be fraud. अगर कोई इसके अलावा कोई और है जिसे लॉ ने स्पेसिफिकली फ्रॉड बताया है तो फ्रॉड माना जाएगा। तो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स इन सेक्शन 17? false statement, active concealment of facts, promise made without intention to perform, any other act to deceive, or any act specifically declared the fraudulent by the law. झूठ बोलना, सच बात छिपाना, धोखा दे, कोई ऐसा प्रॉमिस करना जो आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई और काम करना जिसका पर्पस धोखा देने का हो, या कोई स्पेसिफिक एक्ट जिसे लॉ ने कहा हो ये फ्रॉडुलेंट माना, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड सेक्शन 17 विल बी एप्लीकेबल। What are the essential elements? This is the important topic for examination point of view. First point, there must be a representation or assertion, any statement, and it must be false. Concealment means hide. Concealment means hide. Okay. So mere silence as to the fact is not fraud. This line is very much important because a practical question can be asked on this point in your examination. Example number 16. X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound. X says nothing to Y about the horse unsound. This is not fraud by X by law. X ने ऑक्शन से घोड़ा बेचा जो अनसाउंड था, X को पता था लेकिन X ने Y को कुछ नहीं बताया, साइलेंट रहा, झूठ भी नहीं बोला, साइलेंट रहा। लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट फ्रॉड। Silence normally is not fraud, but silence may be fraud in the following cases. Please read it carefully. I'm giving
1 minute to read these 2 points. Sir, if a person pretends to mentally torture, then he will have to prove. Yes, definitely. कंसीलमेंट बता दिया मैंने, और तो कुछ है नहीं. एक बच्चा सिर्फ यही पूछ रहा है, बार बार लिख के सिर्फ एक क्वेरी लिख रहा है. सर क्या मेरी क्वेरी आप तक आ रही है? बाकी क्वेरी कोई नहीं आई अभी तक. कंसीलमेंट, हाइडिंग, हाइड समथिंग. एक्टिव कंसीलमेंट, knowingly hiding. Fraudulent, for the purpose of fraud. ठीक है. Normal case, silence is not fraud, but these are two cases where silence equal to fraud. These are two cases where silence is equal to fraud. First one is, एक सेकंड बच्चों. First one is duty to speak. एंड सेकेंड वन इज साइलेंस इज स्पीच. यानी कि जहां पर ड्यूटी बनती हो, स्पेसिफिक केस है, ड्यूटी बनती हो वहां आपने नहीं बताया, देन इट इज फ्रॉड. जहां साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, सी द एग्जांपल नंबर 17 and 8. X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound. Y is X daughter. Here the relation between the parties would make it X duty to tell Y if the horse is unsound. X ने Y को एक घोड़ा बेचा जो अनसाउंड था, Y X की डॉटर है, तो यहाँ पर एक रिलेशन ऐसा है कि Y X को बताना चाहिए Y को भी घोड़ा क्या है, अनसाउंड माइंड. Normally, is for this point, the court has right to decide whether this is duty to speak or not. ठीक है. Second is when silence is equal to speech, where X says to Y, X, if you do not deny, I shall assume that horse is sound, and X says nothing. Here X silence is equal to speech. X ने Y से पूछा, अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, सॉरी Y ने X से पूछा कि अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि जो घोड़ा है वो क्या है, साउंड है. X says nothing, X ने कहा ही नहीं, तो ये साइलेंस क्या हो गया, स्पीच. यानी कि वो कंफर्म कर रहा है कि हॉर्स इज साउंड. So there must be a specific statement that should be false. Silence is not fraud in the normal case, but it may be when it is a duty to speak or silence equal to speech. Now, second essential element, the representation must be fact, not mere opinion. एक फैक्ट होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, खाली ओपिनियन नहीं होनी चाहिए. ओपिनियन मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. सी एग्जांपल नंबर 19. X, who is about to sell goods, says that cost him rupees 5,000. This is fact. But if he says now goods worth rupees 5,000, it is statement of. X कहता है मेरे पास जो गुड्स है ये 5,000 रुपए का है, ये फैक्ट है. कहता है 5,000 का होगा, ये 5,000 का होगा. It is opinion, it is not a fact. The representation must have been made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth. Means the person who is making the statement, he knows the statement is false. The person who making the statement has the knowledge that statement is false. जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, झूठ बोल. राइट. फोर्थ पॉइंट,
The other party must have been induced to act upon the representation or assertion. Induced, फुसलाना, बातों में आना. You are making the false statement and the other party is not believing in your statement, then it is not a fraud. आप झूठ बोल रहे हो, वो आपकी बातों में ही नहीं आ रहा, तो फिर फ्रॉड किस बात? क्लियर इतनी बात? See the example number 20, again important example. The other party must have been induced to act upon the representation or assertion. Example 20. A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that one B was a director of the company. A had never heard of B and therefore the statement was immaterial from the point of view. A's claim for damage in this case was dismissed because the untrue statement had not induced A to buy the shares. क्या कह रहा है ये? A ने एक कंपनी के शेयर खरीदे. उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि मिस्टर बी एक डायरेक्टर है कंपनी के, जो वास्तव में नहीं थे. यानी कि दिस वाज द फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. ओके. A has no idea who is B. A को पता ही नहीं है B कौन है, ना कोई रिश्ता है, ना संबंध है, कुछ नहीं है, जानता ही नहीं है. Afterwards, A says there is fraud with me. Company has made the false statement, so there is fraud with me. Court says no. Whether you have purchased share on the basis of this statement that B is the director. क्या आपने इस बात पे शेयर खरीदे कि बी डायरेक्टर है? आप तो बी को जानते भी नहीं हो. This is not this false statement is not relevant in your case. So there is no fraud with A. लॉ ने क्या कहा कि आपने शेयर खरीदे उस कंपनी के जिस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा था समथिंग इज Mr. B is the director, but actually he is not director. A bought share of the company in which prospectus it was mentioned that B is the director of the company, but actually he is not. And A has no idea who is B. So A could not purchase the share on the basis of this information. So this information is not relevant for A. So there is no fraud by company to A. Clear इतनी बात? Next point. The other party must have been relied upon the statement representation and must have been deceived. Other party को धोखा हुआ हो, आपने you made a false statement, party is induced and that party has suffered some loss, has been deceived. Then there is fraud. आप झूठ बोल रहे हैं, सामने वाली पार्टी आपकी बातों में ही नहीं आ रही, तो फ्रॉड कहां से? See the example number 21. P bought a Canon. Canon means stove, large stove, from H on credit. The Canon was defective, but H had plugged gunpowder, and T did not examine the Canon, but when he used it burst. Held as the plug had not deceived T, he was liable to pay. क्या मतलब हुआ? T ने एक तोप खरीदी H से. अब उसने तोप क्या थी? डिफेक्टिव थी. H ने जैसे इसमें बारूद लगाया तो बस्ट हो गई. तो क्या हुआ? T ने कहा मैं पेमेंट नहीं करूंगा. कोर्ट ने कहा दिस वाज नॉट ए फ्रॉड. Why? कि सब T asked that there is fraud with me, I will not pay. Court says no, you have to pay. There was no fraud with you. Why? Court said this. The court said that
the party was silent at the time of making the contract, and you didn't tell him what is the purpose for the cannon. Some people purchase cannon just before as a monument before the gate. So there was no fraud. क्या कहा लॉ ने? भाई आप तो बेच रहे थे लेकिन आप बातों में थोड़ी ना आए, आपने देखा परखा तब खरीदा आपने, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाए. And last point for this importance of essential elements for fraud, the other party suffered some loss. You are making false statement, other party is deceived, but there is no loss, then there is no fraud. अगर loss नहीं है तो fraud भी नहीं माना जाएगा. What are the consequences of fraud? There are three consequences. Listen, a contract induced by fraud is voidable at the option of the party who is defrauded. And until it is avoided, it is perfectly valid. The party defrauded has, however, the following remedies. क्या क्या remedy है जिसका defraud हुआ है? He can resign the contract, resign कर सकती है या confirm कर सकती है. He can resign or he can affirm. He can resign or he can affirm. He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. मतलब just in short language, party can insist for the genuine performance. कि भैया अगर fraud नहीं होता तो जिसके लिए हमने contract किया वही चीज आप perform कर दो. And if there is some losses, then party can claim compensation. He can file suit for damages, right? Claim कर सकते. Now, important exceptions for fraud. In the following cases, in these three cases, contract is not void. ये वो केस हैं जहां पर contract voidable नहीं है. First, where the consent of the party to a contract was caused by silence amounting to fraud and the party could discover the truth by ordinary diligence. Means if party use his brain, ordinary brain, he can find that there is fraud with him, the person making the false statement, then there is no fraud. अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आपको दिख रहा है कि झूठ बोल रहा है, आप अपना दिमाग लगाते तो मालूम पड़ जाता, then it is not fraud. For example, I'm purchasing the pen, blue pen, and the shopkeeper is giving the black pen. I am checking by writing whether it is blue ink or black ink. Then it is not a. Where the third party has acquired an interest in the property for value, means there's some fraud with you. Some fraud with you. For example, Mr. X purchased your watch by fraud. Then Mr. Until you take the decision whether you resign the contract or not, the watch has been again sold from X to Y. X ने fraud करके आपसे घड़ी खरीद ली, आपको मालूम है fraud हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि डिसीजन यस में लें, रिजाइन करें, कंटिन्यू करें, जब तक एक्स ने घड़ी वाई को बेच दी. Now you cannot resign. And third one, you know there are fraud with you, but you have taken the benefit. For example, I asked the blue pen, but he has given the black pen. Right? After and when I reach my office, then I open the pen, then find it is black in place of blue. And there was fraud with me. And in place of resigning the contract, I decided to work with the black pen. Now I cannot. मैंने ब्लू पेन मांगा, उसने मुझे ब्लैक पेन दे दिया, मैंने ऑफिस आके चेक किया तो ब्लैक था, मैंने चेक किया ब्लैक है, उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया, रिजाइन नहीं किया. जब मैंने बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, देन उसको मैं रिजाइन नहीं कर. क्लियर? So query from your side. Meaning of if forbidden
Restricted. Forbidden means restricted. Someone is asking, sir, what is the writing practice and why should we do it? Writing practice means you just practice your studies, your provisions of a law by writing, so that you can perform in the exam in better way. Someone is asking, sir, how can moral contract is a contract? There must be written. Moral contract, I think you are saying oral contract. There must be written, and I cannot mention these agreement if you don't speak. I think the horse is blind. If it can be true, please give reason. Listen carefully. I think you are talking about the exception of the silence. Take a second point. Oral is also a valid contract, but you have to prove in the court as the evidence that this was happened actually, right? Fiduciary relationship of trust and belief. I have already discussed in the last class. Someone is asking, sir, in example number 17, if the relationship was of husband-wife, then it is duty to speak. Yes, I think so, definitely. सर एक्स अपनी ही डॉटर को ऑक्शन के थ्रू हॉर्स क्यों बेचेगा? अरे भाई, अगर बेच रहा है तो क्या बुराई, क्या ऐसी डॉटर खरीद रही है ऑक्शन कर रहा है? ऐसा मत करो यार, ये तो क्यों का तो कोई लॉजिक ही नहीं है. Duty to speak, the relation is such that the facts should be cleared. और क्या है? Sir, do we have to write examples with these points in the exam? You may write the examples. फोर्थ नंबर नहीं समझा. अच्छा बेटे, दिस पॉइंट सेज द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन डिसीव्ड. अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आप धोखे में नहीं आ रहे हैं, तो वो फ्रॉड नहीं है. दिस एग्जांपल सेज कि अपनी गन बेच रहा है, उसने कोई धोखा नहीं दिया, वो आप अपने आप धोखे में गए. उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने आपको इंड्यूस नहीं किया, राइट? नेक्स्ट. Defrauded means just making the fraud. Second point, exceptions of fraud. When other party, मान लीजिए मैंने को घड़ी बेची अपने दोस्त को, या मैंने घड़ी खरीदी फ्रॉड से, बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर घड़ी खरीद ली. पर जब तक वो सामने वाला उस पर डिसीजन लेता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करना है, उसे इन्फॉर्म करना है कोर्ट में कि भाई मेरे संग फ्रॉड हुआ, उससे पहले ही वो घड़ी मैंने थर्ड पर्सन को बेच दी, थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट बेनिफिट मिल गया, तो वो अब कैंसिल नहीं हो सकता, राइट? और क्या है? डिलीजेंस, इंटेलिजेंस, यू कैन से, दिमाग लगा के अपना. Representation, sir, what is the meaning of representation in elements of fraud? Representation means statement. You can say the statement. What type of question come from this unit 3? I think अब इसके जवाब के लिए तो you can download the notes of first class. उसमें सब mention कर रखे हैं मैंने. सर केस लॉ प्रैक्टिस करा दीजिए. वेट फॉर द लेक्चर 10th. पहले प्रोविजंस तो हो जाए बच्चे मेरे. तो कितनी बार लिख के भेजा है बच्चे ने? कम से कम 40 टाइम्स. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Misrepresentation. A slight difference between misrepresentation and fraud. In fraud, the statement is false. In misrepresentation, statement is false. But in fraud, the person making the statement knows that it is false statement. But in misrepresentation, the person making the statement, he has no idea that he is making the false statement. मिसरिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं मिथ्या वर्णन. मिथ्या वर्णन. Misrepresentation का मतलब the false statement innocently. According to section 18, there is a misrepresentation when a person positively states that the fact is true when his information does not warrant it to be so. Means he is making the false, he says that he is making the fact, he is making the true statement, but actually that was not true. Suppose X says Y that his bike runs 70 kilometers per liter. X believes that he is true, but actually bike runs 40 kilometers per liter. Here there is misrepresentation by X ने Y से कहा कि मेरी जो बाइक है वो 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है. X भी यही मानता है, पर एक्चुअल में बाइक देती है 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज. तो ये क्या कहेंगे, ऐसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन, इसे फ्रॉड नहीं कहा. राइट. When there is breach of duty, breach मतलब तोड़ना, breach of duty by person without intention to deceive. The important thing in this point is without intention to deceive, which brings an advantage to him and loss to others. कि सब अनजाने में एक धोखा दे दिया, अनजाने में कुछ ऐसा काम हुआ जिससे आपका फायदा हुआ, दूसरे को लॉस. Example 23. While taking a life insurance policy, X states that his age is 25 years, believe it to be true. वो भी यही मानता है कि उसकी एज 25 साल है, कोई डॉक्यूमेंट होंगे वॉट एवर बी, बट एक्चुअली ही इज 30 years. नाउ ही इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉट फ्रॉड. उसने फ्रॉड नहीं किया है, उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया. When a party causes the other party to an agreement to make a mistake as to the subject matter, कि एक आदमी दूसरे को इस तरह से बात करता है कि सामने वाला गलती कर दी और वो अनजाने में करता है. He is making the statement innocently, right? What are the consequences of misrepresentation? Same consequences as that of fraud. First two. Third, and that is the sue for to claim the damages not available in case of misrepresentation. All other are same. It means the aggrieved party can avoid or resign the contract or accept the contract but insist for the genuine performance. Insist that he shall be placed in the position in which he would have been if the representation made have been true. Right? So these are the differences between fraud and misrepresentation. Please read it carefully.
Okay. So someone has asked the problem in point number 4. The other party must have been induced to act upon the representation or assertion. It means the other party, the person. So, for example, Mr. X is making the false statement before Y. For fraud, Y must be induced with this statement, right? So, one more query from your side, sir. Credit side of bank column, BRS chapter, but I am not here to teach you accounts. Okay. Someone is saying, sir, you had not taken contract of marriage, contract of family settlement, share allotment. I've already taken in the last class, beta. Please, you see the recording. What is the meaning of breach? Breach means cancellation, break. Sir, in case of fraud or misrepresentation, jail bhi ho sakta hai kya? Depend of the severity of the case. The court will decide. How can I understand misrepresentation is happening to me? It can be fraud. Yes, you have to prove before the court that your intention is very clear. You have no idea that you are making the false statement. कह रहे हैं कि सर ये बताओ सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा फ्रॉड किया है मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो आपको प्रूव करना है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ last topic of second part free consent the mistakes section number 20 to 22 claim of damages means claim of compensation right आगे बढ़ते हैं mistake means erroneous belief about something that error a mistake is in the law are two types mistake of law and mistake of fact mistake of law is again classified in two categories mistake of law of country and mistake of law of foreign country mistake of fact is again classified in two heads bilateral and unilateral so first we take mistake of law mistake of law of country and mistake of law of foreign country a person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law. It means a person of the country is presumed to have the knowledge of the law of country whether he actually have or not. एक आदमी जो देश में रहता है उससे ये माना जाता है कि ये माना जाएगा कि उससे हमारे देश के कानून की जानकारी है उसे हो या नहीं अगर वो गलती करता है for Indian law. If the person is Indian and make a mistake of Indian law, then mistake cannot be considered. यानी कि अगर कोई for example one person cross the crossing on red light and say sir I don't have the idea of law if we have to stop at red light it is not possible fine will be there A and B enter into a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. This contract is not voidable. मतलब ये हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल का कि ए और बी काउंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सोचते हैं कि ये तो टाइम बार्ड हो चुका है कोई पेमेंट टाइम बार्ड हो चुका है बट एक्चुअल में वो नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा पेमेंट करना मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से This point says the person of a foreign country can be presumed that he has no knowledge of Indian law. हमारे देश की कानूनी जानकारी नहीं होगी ये माना जा सकता है and in such mistake the contract is void and this mistake is considered please underline mistake of fact right mistake of fact again two types bilateral unilateral when both the parties are under mistake then it is called bilateral mistake and in this case contract is void
And bilateral mistake is maybe of existence, maybe of identity, maybe of quality, maybe of quantity, maybe of title means ownership, and maybe of possibility. Unilateral mistake, only one party making the mistake, but in this context is perfectly valid, right? So please listen my words. In case of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, the contract is voidable, right? But in case of mistake, contract may be valid, may be void. If contract is a mistake, is of Indian law, law of country, contract is valid. In case of law, foreign country, contract is contract is void. It is considered as bilateral mistake. Because in case of bilateral mistake, both the parties are under mistake and the contract is again void. But in case of unilateral mistake, only one party is under the mistake, contract is valid. Clear? So now the time for penalty shootout 3, but I'm taking your queries. Meaning of repudiate. Repudiate means cancel. Sir, minor ने fraud किया तो contract is void again. Rule of estoppel I have already discussed. Point number 5. Point number 5 says the example of canon. Other parties has been induced with the words of the person who making the false statement. अगर मान लीजिए जो स्टेटमेंट फॉल्स दे रहा है उसकी बातों में नहीं आता, किसी और तरीके से उसने बात धोखा हुआ, तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन बी वाई उसको बात पे बिलीव नहीं कर रहा है, वो उस बात पे नहीं कर रहा है, वो किसी और तरीके से अंदर आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्रॉड नहीं माना। Sir, what is the meaning of void and voidable? I have already told you 5 or 6 times. Void, बेकार हो गया, voidable may be, but until it is void, it is perfectly valid. Sir, which book is the best for business law? The Institute's study module is the best. सौरभ कह रहे हैं सर बाकी कंट्रीज में जाके कुछ गलती कर दें तो वो इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दे देते हैं। भाई ये वहां का लॉ चलेगा, हम अपने लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो रेडी फॉर द पेनल्टी शूटआउट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। The term fraud is defined in section 15, 16, 17 or 18. Which of the following is not included in the term fraud? Concealment of fact in good faith, when the court declares it fraudulent, when it is made with the intention to deceive, promise made without intention to perform. Third question. A promise made without intention of performing it amounts to misrepresentation, fraud, coercion, none of these.
Mistake of foreign law is treated in the same manner as mistake of Indian law, mistake of fact, misrepresentation, fraud. An agreement for the sale and purchase of horse which unknown to both the parties was dead at the time of bargain. दोनों पार्टियों को नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है. The contract is void, valid, voidable, illegal. आंसर एक बार में भेजना बच्चे, तभी नाम लूंगा आप लोगों का. Sixth question, a false statement of facts made without any intention to deceive the other party falls under the category of fraud, under influence, coercion, misrepresentation. The aggrieved party, that is the party whose consent was obtained by fraud, may resign the contract only, may affirm the contract only, may resign or affirm the contract, none of these. चलिए, एस्टॉपल का मतलब होता है रोकना, डिनाई नहीं, मतलब जो एस्टॉप मींस रोकना, एस्टॉप. Sir, you have not taken the legal effects of agreement without free consent. I have taken matter 19. I have already discussed section 19. Legal effects of portion 19 section. आपने शायद कल की क्लास नहीं देखी बच्चे. डिफरेंस का 5th पॉइंट, डिफरेंस के 5th पॉइंट में हमने जो चर्चा की डिफरेंस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. इन 5th पॉइंट इट सेज इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर वो धोखा हुआ है तो कोर्ट, देखिए क्या लिखा था उसमें, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ. वो ये कह नहीं सकता फ्रॉड, जिसने फ्रॉड किया कि भाई साहब उस पर मौका था, वो ढूंढ सकता था, उस पर अच्छा सा मौका था, वो पता लगाता, रिपोर्ट लेता. ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है. बट मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा अलाउड नहीं है. मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर वो कहता है कि साहब मैं तो झूठ बोल रहा था, लेकिन इसको तो मालूम था, ये पता कर सकता था, तो कोर्ट इसको रिलीज दे सकती है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने एक्सेप्शन में बताया था, you have told the exception कि if the party can find out the falseness by making the ordinary diligence. Ordinary diligence अगर आपको सामने सामने दिख रहा है, then it is not fraud. ठीक है, चलिए ये हो गया. आंसर आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने अभी दिए नहीं. मैं आंसर देता हूँ, फिर ब्रेक रखेंगे. आज 10 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ. चलो, और पहले आंसर्स. Defined in section 17. Next. Concealment in good faith. Good faith मतलब जेन्युइन रीजन से, बस पे कोई जेन्युइन रीजन है तो फ्रॉड निकलाएगा, क्या बन जाएगा वो? मिसरिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इज फ्रॉड. फोर्थ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ टेकन एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. नेक्स्ट, agreement for sale and purchase of horse which unknown to both the parties were dead. It is bilateral mistake and the contract is void.
Next. False statement of fact made without any intention to deceive the other party falls under the category of without any intention to deceive. It is misrepresentation. Last, the aggrieved party, that is the party whose consent was obtained by fraud, may resign or affirm. ठीक है? See the, so who are the lucky ones? First one is Miss Niranjana. Congratulations once again, beta. Next one is Miss Sakshi Pandey. Congratulations, bete. Then Miss Komal Preet Kaur. Congratulations, beta. Then Miss Pragya. Congratulations, beta. एंड आज एक दो नाम और ले लेता हूँ. मिस्टर गनुगा रायल. Congratulations. So, congratulations all of you who has given all the correct answers. Okay. Now we have the break of चलिए 10 minutes. Then we will rejoin after 10 minutes. ठीक है बच्चों? चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे 10 मिनट्स के बाद.
ओके, वन पर्सन इज आस्किंग सर, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है तो क्या हम लोग आईसीआई की बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो लिख सकते हैं? डेफिनेटली सकते हैं बच्चों। सर हाउ मेनी क्लासेस ऑफ बीएल यू हैव टेकन टिल नाउ, प्लीज चेक द शेड्यूल। वैसे बट दिस इज द 5th लेक्चर फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभय जी प्लीज चेक करिए एक बार स्लाइड्स को, मेरा आंसर दिया हुआ है आपका, आप गलत बोल रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए बच्चे। सारा शेख इज सेइंग सर आपने एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बेटा वेट एंड वॉच, अभी आएगा, अभी ये अभी वो थर्ड पार्ट वही है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द यूनिट is legality of object and consideration. So we are discussing on this part what are the unlawful objects and considerations, section 23, right? First, if it is forbidden by law, if consideration is forbidden by law, it is unlawful. For example, A contracted with B to deal in the stolen goods. चोरी के माल में डील करना है. It is forbidden, restricted by law. Therefore, it is void. If it is of such nature that if permitted, it would defeat the provisions of any law. Means it is not prohibited by law, but if allowed, it would defeat. कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि वो अभी तो सही है, लेकिन अगर हमने अलाउ कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को डिफीट करेगा. सी द एग्जांपल नंबर 26. X was licensed under the Excise Act to run a liquor shop. A was licensed under Excise Act to run a liquor shop. The Act forbade the creation of partnership to run the shop. A को लाइसेंस मिला, वो लीकर शॉप चला सकता है, लेकिन एक्ट ने साफ मना कर दिया ये काम पार्टनरशिप में नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा. ए टुक बी इनटू पार्टनरशिप, उसके बाद भी ए ने बी को पार्टनरशिप में ले लिया. दिस इज अ वॉइड. क्लियर इतनी बात. थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फ्रॉडोलेंट मींस पर्पस इज टू फ्रॉड. ABC enters into partnership to run the business of fraud and distribute the earning in equal ratio. कि ABC पार्टनरशिप में आए कि भैया हम फ्रॉड करेंगे, जो आएगा उसे बांट लेंगे आपस में, यह कहलाएगा फ्रॉड. The purpose is fraudulent. The agreement is void. If it involves or implies injury to the person or property of another, किसी को हर्ट करना, किसी की प्रॉपर्टी को हर्ट करने का ऑब्जेक्ट हो तो वो अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू बर्न द हाउस ऑफ सी एज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ सी, द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल एंड वॉइड. इफ कोर्ट रिगार्डेड it as immoral, immoral means bad character. A asked B, if you arrange a girl for marriage with me, I will give you 50,000. Here contract is void as it is immoral, right? Liquor shop means शराब की दुकान. Okay, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, what is liquor shop? Next, when the court regard it as opposed to public policy, जब कोर्ट को लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक के को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. तो दिस इज द कैटेगरी. व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? फर्स्ट इज ट्रेडिंग विद एनिमी. एन एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी इज वॉइड. आप दुश्मन देश के नागरिक के संग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉइड माना जाएगा. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन
Stifling prosecution, it is an agreement to abstain from prosecuting a person for an offense. कि किसी पर्सन को जिसको सजा होनी चाहिए उसे आप बचा रहे हैं सजा से, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। उस तरह कॉन्टेक्ट क्या होता है? वॉइड। A promises to drop a prosecution when he has instituted against B for robbery, and B promised to restore the stolen property. The agreement is unlawful, but a compromise in case of compoundable offenses is valid. A ने प्रॉमिस किया B से कि भैया तूने मेरे घर में डकैती डाली थी, तू मेरे को सारा सामान वापस कर देगा, मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। अब डकैती डालना, रॉबरी करना इज क्राइम, तो इट शुड बी पनिश्ड। तो आप उसे बचा रहे हैं, it is stifling prosecution case, and this agreement is void. But if the offense are compoundable, यानी compound मतलब जिनमें adjustment कर सकते हैं, law ने allow किया हुआ है, compounding is allowed by law, in that case adjustment may be possible, right? फिफ्थ पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चे। हाँ, एक someone is saying sir, marriage brokers, बेटे marriage brokers are charging their consultancy fees, not arranging, right? Next point, maintenance and champerty. Please listen this concept. Suppose A offers to B, see the example, then we will come to the provisions. A offers to pay B rupees 2000 if B will sue C. A's motive is to hurt C. This agreement between A and B is maintenance agreement. I explain in easy way. Please. Suppose I ask B, please file a fake suit against B. I ask A, please file a fake suit against B. And I will maintain all the expenses. I will maintain all the expenses. This is the case of man. मैं A से कहता हूं कि तुम B के खिलाफ एक फेक केस फाइल कर दो क्योंकि मैं उसे परेशान करना चाहता हूं, और जो खर्चा होगा वो मैं मेंटेन करूंगा. This is the case of maintenance and it is void. Maintenance is an agreement to give assistance, financial or otherwise, to another to enable him to bring or defend legal proceedings when the person giving assistance has got no legal interest in his own in the subject matter. यानी केवल उसकी हेल्प कर रहा है किसी को परेशान करने के लिए. That is called contract of maintenance. But in case of champerty, he is sharing benefit. So again, taking the example, I ask A to file a fake case against B and I will maintain. This is maintenance, but I add one line to this contract. I add one line to this contract that I will share and the money which will you get from B. मैंने ए से कहा तुम बी के खिलाफ एक फेक केस फाइल कर दो, जो खर्चा होगा मैं बियर करूंगा. ये क्या कहलाया? केस ऑफ मेंटेनेंस. पर मैंने एक लाइन ऐड कर दी कि जो तुम बी से कमाओगे उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए. दैट इज द केस ऑफ चैम्पर. व्हेन आई एम जस्ट मेंटेनिंग द एक्सपेंसेस, द केस ऑफ मेंटेनेंस. व्हेन आई एम शेयरिंग द प्रॉफिट फ्रॉम दिस केस is called the champerty, and both are void. Maintenance and champerty is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for the recovering money or property and he is to share in the proceeds of action. Example 33, A agrees to pay the expenses if B sues C, and B agrees to give a one half of the any proceed received by B as a result of the said suit. If the object of the contract is just to assist another party in making the reasonable claim arising out of the contract, then to have a fair share in the profit, it is valid. अगर reasonable claim के लिए हो रहा है तो valid है,
अगर अनरीजनेबल है, फेक केस है, इट इज लिटिगेशन मीन झगड़ा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बताया मैंने, किसी को सजा होनी चाहिए, आप उसे बचा रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। Interference with the course of justice, it is something like stifling prosecution. An agreement to pay, see the example number 34, an agreement to pay to change his decision is unlawful. And marriage brokerage contract, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन था, an agreement to negotiate marriage for reward money, which is known as a marriage brokerage contract, is void and is as it is opposed to public policy. An agreement to pay money to person hired to procure a wife is opposed to public policy and therefore void. So some of you are saying, sir, what is the meaning for then why the marriage bureaus are there? They are charging us consultancy fees, not the brokerage. Interest against obligations. Interest means benefit. Obligation means duties. Yani if you are charging benefit for your duties, then it is void. The following are the example of agreement that are void as they tend to create an interest against obligations. The object of such agreement is opposed to public policy. See the example. An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another for the performance of agency is invalid. एक एग्रीमेंट है, एजेंट प्रिंसिपल को बिगर बताए कुछ कमीशन सेट कर रहा है, तो ये क्या है? इनवैलिड, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी ऑफ द एजेंट इज टू गिव ऑल द मनीज टू द प्रिंसिपल, राइट? वन मोर, A who is the manager of a firm agrees to pass a contract to X if X pays A 2000 privately, this is void agreement. Simple फंडा है। A ने कहा कि A मैनेजर है, उसने कहा मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा अगर मुझे तुम 2000 रुपए दे दोगे अलग से, दिस इज द इनवैलिड void. Champerty I have discussed. Negotiate marriage, मैरिज में बार्गेनिंग करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, ऑफिस मतलब पोस्ट, सेल ऑफ पोस्ट. Agreement for sale or transfer of public offices and titles, that means for example recognition authorities or procurement of public recognition like Padam Vibhushan, Paramveer Chakra for money consideration. यानी कि आप इन अवार्ड पाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, या कोई ऑफिस में पोस्ट पाने के लिए पैसा दे रहे हैं, दिस आर द unlawful agreement. An agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void. एक एग्रीमेंट कर रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट से कि हम आपको पैसे देंगे, आप रिटायरमेंट ले लो ताकि दूसरे को नौकरी मिल जाए, दिस एग्रीमेंट इज परफेक्टली void. An agreement to procure a public recognition like Padam Vibhushan for reward is void. आप पद्म विभूषण के लिए पैसा दे रहे हो, इस तरह की एग्रीमेंट क्या है? void. Agreement for creation of monopolies. Suppose Mr. X entered with an agreement with Nagar Palika of Agra, Municipal Corporation of Agra, that municipal corporation restrict everyone except X to sell his goods in the market. मिस्टर एक्स कॉन्टेक्ट कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि आप मार्केट में सिर्फ उसी का माल बेचने देंगे, किसी और का नहीं. दिस एग्रीमेंट इज क्रिएटिंग मोनोपोली एग्रीमेंट, so this agreement is void. Agreements having for their object the establishment of monopolies are opposed to public policy and therefore they are. Suppose A contract with municipal corporation for disallowing all the shopkeepers from the market other than A. This agreement is void.
क्लियर? एक बार पढ़ लीजिए बच्चों। So these were the agreement against the public policy. Now agreement which are expressly declared void by law. ये वो एग्रीमेंट हैं जो लॉ ने स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिए हैं। इनमें से काफी हम पढ़ चुके हैं, बट जो रह गए हैं वी विल डिस्कस। First is agreement by incompetent parties, already discussed. Agreement under the mutual mistake, we have already discussed. Agreement, the consideration or object of which is unlawful, we have already discussed. Agreement, the consideration or object which is unlawful in part, it is again void. Agreement without consideration, we have discussed some exceptions were there in unit 2. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी रुकवाने का एग्रीमेंट वॉइड होता है अदर देन ए चाइल्ड. Every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is void. So if a person being major agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding. But in case of child marriage, if contract is for restraint of child marriage, it is binding. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, an agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is void. किसी को आप व्यापार करने से रोकने कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट void होता है. But some exceptions are there for this rule. कुछ exceptions हैं इस रूल के लिए, प्लीज ध्यान दीजिए. Sale of goodwill. Suppose there are two shops and one place. One is for Haldiram and other for some Jaldiram. ठीक है? The goodwill of Haldiram is better than Jaldiram, right? So the value of shop of Haldiram is higher than the value of shop of Jaldiram because of goodwill. So if Haldiram is selling his shop to Jaldiram with his name of Haldiram, then the Jaldiram has right to restrain Mr. Haldiram to use this name Haldiram for some time for in a special some specified area. क्या बताया मैंने बच्चों आपको? हल्दीराम और जल्दीराम की दो दुकानें थी बगल बगल में. हल्दीराम की गुडविल ज्यादा होगी, वो अपना दुकान बेच रहा है जल्दीराम को हायर रेट पर अपनी गुडविल के साथ. तो उस केस में जल्दीराम रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है हल्दीराम पर कि हल्दीराम इस हल्दीराम नाम को यूज नहीं करेगा पर्टिकुलर एरिया में, या सेम बिजनेस नहीं करेगा पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में. तो इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल द रेस्ट्रिक्शन फॉर trade may be there. A seller of goodwill of a business may be restrained. Seller of goodwill may be restrained from carrying on a similar business within specified local limits, provided that such limits appears to the court reasonable regarding being had to the nature of it. यानी कि जो गुडविल को बेच रहा है उसे रोका जा सकता है सेम बिजनेस करने से, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन कोर्ट की नजरों में सही होनी चाहिए, राइट? दैट कोर्ट विल डिसाइड वेदर रेस्ट्रिक्शंस आर वैलिड और नॉट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लिसन. A partner shall not carry on any business other than that of firm while his partner. It is valid restriction. यानी कि जब तक वो फर्म में पार्टनर है वो कोई और काम नहीं करेगा. अगर ये रेस्ट्रिक्शन है तो वैलिड मानी जाएगी. An outgoing partner जो रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, an outgoing partner may agree with his partners not to carry on the business similar that of firm in a specified period, specified local. एक outgoing partner एग्रीमेंट कर सकता है बाकी पार्टनर से कि वो छोड़ के जा रहा है
वो सेम बिजनेस नहीं करेगा पर्टिकुलर एरिया में, ये वैलिड है, रेस्ट्रिक्शन है। Partners may, upon or in anticipation of dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a similar business that of firm within specified period or specified local limits. Means कि if firm is going to dissolution, so partners may agree that all the partners or some of them, all the partners or some of them will not continue the same business in a particular period or particular area. This type of restriction is valid as per law. When the goodwill of the firm is sold after dissolution, firm dissolve हो गई, goodwill बिक गई, a partner may carry on a business competing with that of firm, that of buyer, and he may advertise such business. Agar firm is dissolved and the goodwill has been sold, the partner may do the same business. The person who has sold the business may do the same business, but subject to the agreement. एक agreement के बतौर करना पड़ेगा. He may not use firm name. He cannot use the firm name. He cannot represent himself as carrying on the business of the firm. Solicit custom of the person who were dealing with the firm. यानी कि वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता. वो ये नहीं कह सकता कि मैं उसी फर्म का पार्टनर हूं, मैं वही बिजनेस कर रहा हूं. वो ये नहीं कह सकता. जो कस्टमर थे पुराने, उनसे पास नहीं जा सकता ये कह के कि भाई मैं तो वही बिजनेस, मैं पुरानी फर्म का पार्टनर हूँ, वही फर्म है हमारी, हमें काम दे दो, वो नई फर्म बेकार है. ऐसा नहीं है. And any partner may, upon the sale of goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of firm within a specified period or within a specified. Same thing. Any partner upon sale of the good. पार्टनर से रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं, या गुडविल बिक गई है फर्म की तो सेम बिजनेस वो नहीं करेंगे. तो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन दैट आर अलाउड. कुछ और भी हैं डिस्कस कर रहे हैं बच्चों आपके साथ. Trade combinations. If trade combination are created for the, trade combination में unity, unions होती हैं, business unions होती हैं, लोहा व्यापार उद्योग, ICE union, business combinations with idea of regulating the business and not restraining it have been held to be desirable in public. If unions are created for the benefit of public, they are. See, an agreement between certain ICE manufacturing companies not to sell ICE below a stated price and to divide the profit in a certain proportion is not void. एक एग्रीमेंट हुआ बर्फ बनाने वालों में कि भैया मिनिमम प्राइस यही रखेंगे, इससे कम नहीं करेंगे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे. Such agreement are neither in restraint of trade or nor opposed to public policy, क्योंकि पब्लिक के बेनिफिट के लिए. Fourth point, service contract. This is again important point for your examination point of view. Sometimes an employee, by the terms of his agreement, is prevented from accepting any other engagement during the employment or a similar engagement after the termination of his service. Means a doctor has been appointed in a district hospital, right? With the condition the doctor will not do his own practice until he is in the job in the district hospital. It is valid perfectly. But he will never do the practice even after leaving the job from district hospital. This is invalid restriction. एक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जॉब कर रहा है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि जब तक वो जॉब कर रहा है वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा. ये वैलिड है, पर वो जॉब छोड़ने के बाद भी कभी नहीं करेगा, ये इनवैलिड है. अगर वो ऐसा कहता भी है तब भी वो अलाउड. As regard the first restraint, it is valid. Is it not in restraint of trade if it is to operate while the employee is contractually bound to serve the employer? The doctor, for example, are usually debarred from private practices during the term of their employment. But as regards the second restraint, what is second restraint? A similar engagement after the termination of service. Job छोड़ने के बाद भी वो नहीं करेगा, ये allowed. ये restriction applicable नहीं. Clear इतनी बात?
एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग को रोकने का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग इज ऑलवेज void contract. However, there are certain exceptions to the above rule. Exceptions are important. A contract by which the parties agree that they dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration. Mark कीजिए arbitration. And that only amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract. क्या डिसाइड हुआ कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, झगड़ा होगा तो यू विल नॉट रेफर द कोर्ट, यू विल डिसाइड योर डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन इज वैलिड. और व्हाट इज द आर्बिट्रेशन? Arbitration like a panchayat. If suppose there dispute between A and B, so A will appoint a person and B, if A or B are agree for that person, they are then that person will call arbitrator. So one arbitrator will decide the case. But if A appointed one person and B is not agree for that person, so A will appoint one person, B will appoint another person, then these two person will appoint a third person, then three person will decide the case. This is a matter of arbitration. तो लॉ कह रहा है अगर केस आप झगड़े में न जाके आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो परफेक्टली वैलिड माना जाएगा, वो रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कहा जाएगा. समथिंग एक्चुअली क्या होता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप द मैटर आर जनरली सॉल्व बाय आर्बिट्रेशन because the government think or court think there is number of disputes in partnership, so they may be resolved early other than court. तो वो क्या करते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन में मुकदमा डिसाइड कर लेंगे हम. आर्बिट्रेशन में जिन लोगों के बीच में झगड़ा है वो अपना अपना एक आर्बिट्रेटर काउंसलर जिसे कहते हैं, we can say the counselor, and the counselor will decide the case. Right? Agreement, the meaning of which uncertain. We have already discussed that in case of agreement is the meaning is uncertain, the agreement is perfectly void. जहाँ मीनिंग ही अनसर्टेन होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा बच्चों? void. अब uncertainty may be subject to quality, quantity, price, ownership. See, A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing to show what kind of oil was intended. A ने B को कहा वो 100 किलो ऑयल बेचेगा, लेकिन कौन सा ऑयल बेचेगा ये नहीं बताया. This is uncertain contract and void. A agrees to sell to B my white horse for rupees 5,000 or 8,000. Price is not certain. Contract is again void. A agreed to pay certain sum when he was able to pay. उसने कहा मैं दे दूंगा जब मेरे पास पैसा होगा. It is again uncertain and void. Wagering agreement. So before starting wagering, अब मैं कुछ query है एक दो आपकी ले लूं मैं. ट्रेड कॉम्बिनेशन अगर स्टडी में होना चाहिए, नहीं एक बार मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया है तो. इसने which topic you are asking, please tell me. Topic number 7. Just a moment. Agreement in restraint of trade. देखिए मैंने बताया किसी को व्यापार करने से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है. इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाए. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप गुडविल बेच देते हैं तो जिसको बेच रहे हैं वो आपको रोक सकता है व्यापार करने से कुछ समय के लिए, कुछ एरिया में. सेकंड थिंग इज पार्टनरशिप के केस में बताया मैंने आप लोगों को कि पार्टनर डिसॉल्व हो रही है, गुडविल बेची जा रही है, तो जो खरीद रहा है वो आपको रोक सकता है. इस बताया मैंने सर्विस एग्रीमेंट्स. सर्विस एग्रीमेंट्स में जिस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जब तक तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो कोई और काम नहीं कर. ट्रेड कॉम्बिनेशंस, यूनियंस बनाई गई हो, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हो, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इट इज ऑलवेज वैलिड. राइट? I have discussed champerty. Champerty is an agreement to help another person for a fake case and sharing the benefit from that case. Champerty क्या है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं फेक केस के लिए और जो मिलेगा उसमें शेयर कर रहे हैं. That is called champerty. Right? Now, wagering, just call you can say सट्टेबाजी. Wagering contract. Wagering agreement.
A wager is an agreement between two parties by which one promises to pay money or money's worth on the happening of some uncertain event in consideration of other parties promise to pay if the event does not. Two persons have bet that if it will rain on Monday, I will give you 1,000 rupees. If it not rain on Monday, you will give me 1,000. ए और बी के बीच में शर्त लगी कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा अगर मंडे को बारिश हुई और नहीं हुई तो तुम मुझे दो. This is the nature of factoring. If a payment is dependent, if a payment is dependent upon the happening of an uncertain event in consideration of payment on non-happening of an event is wagering. कोई पेमेंट डिपेंड करता है किसी घटना के होने या नहीं होने पर और बदले में क्या मिल रहा है घटना के नहीं होने पर कंसिडरेशन. अगर कोई पेमेंट किसी घटना के होने पर डिपेंड कर रहा है, मैंने बताया ना कि अगर बारिश हुई तो मैं पेमेंट करूंगा, नहीं हुई तो आप मुझे दोगे. दिस इज कॉल्ड अ वैगरिंग. These agreements are void. If A and B enter into agreement that A shall pay rupees 100 if it rain on Monday and B shall pay A the same amount if it does not rain, it is wagering. What are the essentials from the definition? What we have find? एग्जाम्पल तो बेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा में दिए हैं. अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जो आपने एग्जाम्पल लेके वो स्टडी में नहीं है. तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं और भी दे सकता हूँ. ठीक है ना. और रही बात चीजें सब पेज नंबर टैली नहीं करे, एक बार स्टडी देखिए, सब स्टडी में है बेटा. ठीक है. अभी मैं देख के आपको पेज नंबर बता दूंगा अगली बार. एसेंशियल्स ऑफ ए वैगरिंग एग्रीमेंट. प्रॉमिस टू पे मनी और मनी पर. क्या हमें मनी देनी है, ये तो प्रॉमिस है. डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट अनसर्टेन होनी चाहिए. म्यूचुअल चांस टू ऑफ विन और लूज, दोनों लोगों को चांस होने चाहिए जीतने हारने के लिए. बोथ द पार्टीज हैव द चांस टू विन और लूज. नो कंट्रोल ओवर द इवेंट. Event should not be under the control of any party and no other interest. This is why contract of insurance is not wagering, because in case of insurance contract, both insurance company and insurer does not want to be dead. इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का सेम इंटरेस्ट होता है. ना तो इंश्योरेंस कराना चाहता है वो मर जाए, ना ही इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि वो मर जाए. राइट. So that is not an wagering. Effect of wagering. Wagering agreements are void but not illegal. But in case of in Maharashtra or Gujarat, they are illegal. Right? Someone has mentioned the page number 1.64. Please check. मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे mention किया. Please एक बार check कर लीजिए. Right? Suit to recover money deposited under wagering agreement. तो समझते हैं पहले इसका मतलब. मैं पहले हिंदी समझाता हूँ, then अंग्रेजी में. Right? Suppose ए और बी के बीच में एक शर्त लगी. क्या? ए ने कहा आई it will be rain on Monday, then you will pay rupees 100. And if it's not rain on Monday, I will pay you 100. ए ने बी से कहा अगर बारिश हुई तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे और नहीं हुई तो मैं 100 रुपए दूंगा. राइट. दोनों ने ही कहा हमें एक दूसरे विश्वास नहीं है. उन्होंने सी को अपॉइंट किया कि सी को हम 100 रुपए दे देंगे और सी से कहा कि जो जीतेगा वो तुम्हें 10 रुपए का कमीशन देगा और जो जीतेगा तुम उसे पैसे दे देना पूरे. ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैगरिंग था, वॉइड. बट सी का जो कॉन्ट्रैक्ट ए से और बी से हुआ वो परफेक्टली वैलिड, क्योंकि वो कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट था, वैगरिंग का नहीं था. इस केस में अगर ए जीतता है तो सी ए से कमीशन ले सकता है, यानी कि ए को सी से केवल 90 रुपए लेने का राइट, क्योंकि उनका एग्रीमेंट वैगरिंग था बी वाला. तो बी के 100 रुपए ले नहीं सकता, वो बी के 100 रुपए तो ले नहीं सकता. राइट. पर उसने सी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड था.
तो उससे वो 10 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ए कितना क्लेम कर सकता है 10 रुपए 90 रुपए सी से, और बी कितना क्लेम कर सकता है पूरे 100 रुपए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का वॉइड था, राइट। लेकिन अगर मान लो सी ने पूरे 190 रुपए ए को दे दिए, तो बी सी से क्लेम नहीं करेगा, फिर वो ए से क्लेम करेगा अपने 100, राइट। If they are taking the example, if a contract between A and B, that A will pay if it not rain on Monday 100 rupees to B, and A will receive 100 rupees from B if it rain on Monday, right? Both A and B have not trust on each other, so they have appointed C to hold the money from A and B 100 rupees, and they agree to give the commission of 10 rupees to C if they win the bet. Okay. The agreement between A and B is void, but the agreement with C is perfectly valid because this is for commission, not for betting. So in this case, if A wants, he can claim only 90 rupees from C. He can claim his money only. He cannot claim the money of B. But the agreement between A and C are perfectly valid. A and C are perfectly valid, so A has to pay the commission of 10 rupees to C. So A can claim only 90 rupees from C and B can claim 100 rupees from B. But law says if C has given all the 190 rupees to A, now B can claim the money of 100 rupees from A, not from C. Clear इतनी बात? So what the law says? Money deposited with a person called stakeholder to be paid to the party on winning upon a wager cannot be recovered by the winner. On the other hand, the loser can recover his deposit from a stakeholder. But where the stakeholder pays the money to the winner, the loser cannot recover it from loser से recover नहीं कर सकता. So generally these are called now the commission agreement with C in the example I have discussed. The commission is the collateral supporting. Collateral means supporting transaction, and this transaction is perfectly. The validity of the collateral transaction cannot be challenged because the main contract, which is wager and have void. Example, in the wagering contract, the broker is entitled to collect his. जो हमने कमीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये कोलेट्रल था, सपोर्टिंग था, ये वैलिड है. वैगरिंग वॉइड है, पर कोलेट्रल इज वैलिड और ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज क्लेम कर सकता. Exception. These are the transactions which are not wagering in nature. Game of skill, crossword, picture puzzle, athletic competitions. A subscription or contribution to an agreement to subscribe or contribute towards any plate or cup or prize or sum of money value of 500 or above to the awarded to the winner or winner of horse race is valid. अगर आप 500 से ज्यादा गिफ्ट देते हैं किसी विनर को जो हॉर्स रेस में है तो वो वैलिड माना जाएगा. शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन अगेन इट्स इन द वैगरिंग बट दे आर वैलिड. इंश्योरेंस are valid, they are called contingent contract. Agreement dependent on the impossible act are always. अगर कोई agreement impossible act पे depend करता है तो वो void. Queries from your side? Sir, if rain is happened, then the party who wins the bet is interested in the event. No, the law says if payment is dependent upon the happening of an uncertain event, it is the nature of wagering, and wagering is always void. Sir, अगर A win किया होता, A win किया तो क्या उसी को पे करना पड़ेगा? I told you बेटा, if A wins, then A can claim only 90 rupees from C. A has already given 100 rupees as deposit to C, so he has to pay the commission of 10 rupees, so he can claim only 90 rupees from C.
Sir, if this contract is entered in Gujarat or Maharashtra, then whole contract will be void as wagering is illegal. Yes. If the contract is void, listen my words. If the contract is void, then collateral are not necessarily void. But if the contract is illegal, then collateral are always void. अगर illegal contract है, तो collateral जो भी होगा वो void. If C denies to give money to A and B, then A or B can sue. Yes, if C denies to give the money to A and B, A can claim the rupees 90 from C and B can claim the 100 rupees from C. Why horse race is not wagering? Horse race is wagering, but the giving the prize to the winner is not wagering. हॉर्स रेस वैगरिंग है, लेकिन हॉर्स में शर्त लगाना वैगरिंग है, पर जो जीत रहा है उसको आप प्राइज दे रहे हो वो वैगरिंग है. कंटिंजेंट वी विल डिस्कस इन आफ्टर सम टाइम. एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे बच्चे. वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो गैम्बलिंग. Gambling, you may say the part of gambling, maybe the nature of gambling, but it is not perfectly gambling. So this is the time. Up revise. So for penalty shootout 4. Wrongly it is mentioned 3. It is 4. Start करें क्या बच्चों? Someone is asking, sir, what is benefit to A if claims 90 after giving 100 on winning? ये तो उन्हें सोचना है बेटे, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं. How can a void agreement is performed after the happening or non-happening of an uncertain event? I'm not getting what you want to say, beta. Lottery is void wagering, yes. Someone is saying, sir, horse race की कोई maximum limit होती है? बेटा मुझे आइडिया नहीं है horse race की क्या लिमिट होती है, मैंने अभी तक कोई पैसा नहीं. प्राइज गिविंग में है एक लिमिट हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं बेटा. अगर प्राइस लिमिट में लॉ ये कहता है कि 500 ऊपर से ज्यादा कि हम प्राइस दे रहे हैं हॉर्स रेस के विनर को, तो वैलिड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन, अब तो कुछ बड़ी बची नहीं. A, B, C entered into an agreement to carry on some fraudulent business and to share the profit in equal share. This agreement is void or valid? If wagering agreement is void, someone is asking, then how can they claim after the performance? That's thing I am saying. वो अपना पैसा तो ले सकता है, जो विनिंग अमाउंट है वो क्लेम नहीं कर सकता. He can claim only his own money from C, not the money of B. Second, A agrees to enclose a space between two parallel lines. दो parallel lines बीच में space को खत्म कर देगा. And B agreed to pay rupees 5,000 to A for this act. This is an agreement to do an illegal act, impossible act, wagering act, forbidden act. Regulation as to the opening and closing of the business in the market are, कि मार्केट कितने बजे खुलनी चाहिए, कितने बंद होनी चाहिए, रेगुलेशन है. तो ये नॉट लीगल, वैलिड, वॉइड, इलीगल. Sir, insolvent means a person who cannot pay his liabilities, who is unable to pay his liabilities. All agreements are contract only if they are made of, ये तो पुराना क्वेश्चन. All agreements are contract
if they are made for lawful consideration and with lawful object. It is given in section 10, 23, A and B, none of these. An outgoing partner can be restrained from carrying on the similar business, any business, both of these, none of these. An agreement which prevents a person from marrying a particular person or a person of a particular class is valid, void, voidable, allowed with court permission. A offers to pay B rupees 1,000 if B will suit C. A's motive is to hurt C, and this agreement between A and B is the maintenance agreement. Is a maintenance agreement? तो आंसर ही मिल गया. Maintenance, champerty, both, none of these. Okay, so start the answers. Void agreement. Next, impossible event. Third, valid. सेक्शन 10 में मेंशन है ये. 23 में तो लिखा हुआ है क्या अनलॉफुल है. सिमिलर बिजनेस, marriage, restraint marriage agreement are void. And 7 तो सबको आंसर पता ही था. Maintain. So who are the lucky one? First one is Mr. Om Gupta. Congratulations. Mr. Sadab. Congratulations, beta. Miss Ruchita Kapse. Congratulations, beta. Miss Pragya. Congratulations. So, congratulations all of you who have given all the correct answer. And at this place, we are completing this unit number 3. In the next class, we will take unit number 4. So be ready for the test once again. Hopefully you have enjoyed the class. समझ में आया होगा बच्चों. Thank you so much for patient hearing. तो मिलते हैं बच्चों next class में. Okay, bye bye.